Hello everybody. So in the last topic we just did like lens and the cataract portion. So now it's time to do glaucoma, and glaucoma is a very high yield topic in the whole ophthalmology. If you talk about a few topics that will give you sure short questions, then glaucoma is one of them. So first is, which of them is not the characteristic of open angle glaucoma? So open angle glaucoma में generally there will be high intraocular pressure will be there, ठीक है, it will be there. Increased cup to disc ratio will again be there. Visual field defect will be there, but there will be no disc edema in case of open angle glaucoma. I'll tell you a little bit more about primary open angle glaucoma. This is also called as chronic simple glaucoma of adult onset. It is characterized by slowly progressive raised IOP. The IOP is raised slowly and very progressively. So that is IOP कितना होना चाहिए जनरली? द रेंज फॉर IOP टू से दैट इज ग्लोकोमा जनरली 10 to 21 है ना. 10 to 21 mm of Hg is the normal IOP intraocular pressure. So greater than 21 mm of Hg at least on few occasions should be noted to say that this is primary open angle glaucoma. Next is open normal appearing anterior chamber angle. Anterior chamber का angle जो होगा that will be appearing as almost normal. Characteristic optic disc cupping will be there and specific visual field defects will be there. So you just got these 4 points और यही 4 points यहाँ पे पूछा गया था जिसमें disc edema is not the characteristic of generally the open angle glaucoma. Which is the gold standard in tonometry? So first of all you must know कि tonometry है क्या. tonometry में generally क्या करते हैं, you measure the IOP, that is intraocular pressure. So there are like different types of tonometers and the best that is gold standard जो है, gold standard is nothing. देखो two types of tonometer you must remember, one is Siot's tonometer and one is Applanation tonometer. So this Siot's tonometer is generally most commonly used tonometer, whereas the second type that is Applanation tonometer, इसका पूरा नेम अगर आप याद करो तो आंसर यहीं से बन जाएगा. Applanation tonometer का फुल नेम होता है गोल्डमैन Applanation tonometer. ठीक है, गोल्डमैन Applanation tonometer, and this is generally the goldman and this is the gold standard for the tonometry. ठीक है, gold standard for tonometry. This is Imbert fixed law पे generally it is based on Imbert है ना, Imbert fixed law which is equals to P is equals to F by A. ठीक है, P is equals to F by A. इस पे जनरली ये क्या है तो बेस्ड है. बीटा ब्लॉकर शुड बी अवॉइडेड इन ऑल गिवन कंडीशंस एक्सेप्ट. सो बीटा ब्लॉकर्स जनरली ग्लाउकोमा में वी गिव बीटा ब्लॉकर्स. ठीक है, सो इट शुड नॉट बी अवॉइडेड इन ग्लाउकोमा, रादर एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लाउकोमा. ठीक है, एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लाउकोमा, व्हेरेज इन इनवर्स ग्लाउकोमा वी शुड गिव एट्रोपिन. ठीक है, सो जनरली आप इतना याद रखो कि एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लाउकोमा. सो फर्स्ट से आंसर मिल गया यहाँ पे, टिमोलोल या फिर बिटॉक्सालोल जनरली विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस. यहाँ पे देखो हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज एंड सीओपीडी. ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज एंड सीओपीडी में जनरली वी शुड अवॉइड बीटा ब्लॉकर्स. ये आपको याद रखना, 3 कंडीशंस. वहाँ पे आपको जनरली बीटा ब्लॉकर्स अस्थमा वगैरह में भी जनरली नहीं देना. फेकोमॉर्फिक ग्लाउकोमा ऑकर्स ड्यू टू, सो दिस फेकोमॉर्फिक, सो this phacomorphic glaucoma is generally the most common lens induced glaucoma, that is secondary angle closure glaucoma. It is induced due to the lens, that's why it is secondary glaucoma, not the primary glaucoma. Caused due to intumescent or swollen cataractous lens. The swollen lens pushes the iris forward, resulting in secondary angle closure glaucoma. So the pathophysiology will be that the lens is swollen and this pushes the iris forward. This pushes the iris forward. As a result, it will lead to angle closure glaucoma, and this is generally due to the main problem is there in the lens. The lens is swollen, so secondary cause of generally glaucoma, that's why this is the secondary angle closure glaucoma, and the best answer here will be intumescent cataract. ठीक है, phacomorphic glaucoma occurs due to intumescent cataract. Which of the following is the carbonic anhydrase inhibitor used in glaucoma? So carbonic anhydrase inhibitors में generally आपने पढ़ा होगा acetazolamide है ना, acetazolamide which is generally used as the first line of drugs में generally इसको प्रीफर किया जाता है इन ग्लाउकोमा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में. सो एसिटाजोलामाइड और डोरजोलामाइड जनरली इट एक्ट्स बाय डिक्रीजिंग द एक्वस सेक्रेशन. मैनिटोल क्या है? मैनिटोल इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक, स्टिमोलोल इज बीटा ब्लॉकर एंड लेटानोप्रोस्ट विल बी द प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स. वर्टिकली फिक्स्ड मिड डायलेटेड प्यूपिल, जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. जस्ट रिमेंबर दिस वन बजवर्ड, that is vertically fixed mid dilated pupil, it will be seen in the angle closure
ग्लोकोमा, ठीक है, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। इन केस ऑफ एंगल क्लोजर ग्लोकोमा व्हाट इज द शेप ऑफ प्यूपिल? शेप ऑफ प्यूपिल क्या होगा? वर्टिकली फिक्स्ड मिड डायलेटेड प्यूपिल, सो दिस इज वर्टिकली डायलेटेड प्यूपिल। इरेगुलर कंस्ट्रिक्टेड फिक्स्ड प्यूपिल विल बी सीन इन केस ऑफ anterior uveitis known as festooned pupil, ठीक है, festooned pupil, you must remember this word also. These are the buzzwords. A 50-year-old female presented with redness, painful, sudden loss of vision. There is sudden loss of vision. She also claims about seeing colored halos. Diagnostic. अगर colored halos है तो इसमें जनरली डिफरेंशियल डायग्नोसिस पहले देखते हैं. व्हाट विल बी द डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर colored halos? एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में colored halos दिखता है, कैटरैक्ट में दिखता है, म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस में दिखता है. सो सडन लॉस ऑफ विजन है, रेडनेस है, पेनफुल सडन लॉस ऑफ विजन है एंड कलर्ड हैलोज है. सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स योर एंगल एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा और एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा. रेटाइनल डिटैचमेंट में इट प्रेजेंट्स विद सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन एसोसिएटेड विद फ्लैशेज ऑफ लाइट, ठीक है, फ्लैशेज ऑफ लाइट. प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा इज बेस्ट ट्रीटेड बाय, सो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा इज बेस्ट ट्रीटेड बाय Latanoprost. Clinically, earliest visual field defect in primary open angle glaucoma, this is paracentral scotoma. Mechanism of action of acetazolamide used in glaucoma, I already told you about this. This generally decrease the aqueous production. यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि डॉर्जोलामाइड जनरली एक्ट्स बाय डिक्रीजिंग द aqueous secretion और प्रोडक्शन, ठीक है, डॉर्जोलामाइड और एस्टाजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, ये सब चीज. नेक्स्ट देखो, which of the following drug is contraindicated in glaucoma patients suffering from bronchial asthma? Bronchial asthma I already told you, beta blocker. So timolol maleate, that is beta blocker, will be generally यहाँ पे contraindicated. This is timolol is the non-selective beta blocker and thus might aggravate the asthma of the patient. So for such patients, bitoxolol is the next best choice. So that's why bitoxolol most of the time the drug of choice there. A patient of 18 year presents with swollen watery eyes, examination confirms glaucoma. Which of the following is best step that provides the earliest relief? Earliest relief के लिए surgical management will be the best choice है, ठीक है, surgical management will be the best choice. Look, once the symptoms of primary developmental glaucoma like photophobia, blepharospasm, lacrimation, eye rubbing has appeared, IOP measurement should be done. Gonioscopy and ophthalmoscopy is done, and if glaucoma is diagnosed, these IOP measurement and gonioscopy, this is generally used for the diagnosis, not for the treatment. You must remember this. Then if the glaucoma is diagnosed, then surgery or goniotomy is generally done to decrease the intraocular pressure, ठीक है. So gonioscopy, this is for diagnosis, don't get confused here. Treatment for the given case, bilateral big blue eyes in image due to increased IOP. Increased IOP है और big blue eyes है. This big eyes, this is ophthalmos. This is going towards your ophthalmos है ना. This is going towards your ophthalmos, and treatment for the given case will be trabeculectomy. ठीक है, trabeculectomy preferred in this case because corneal clouding is preventing visualization by gonioscopy. ठीक है, gonioscopy वहाँ पे क्या हो सकता है जनरली, clouding, corneal clouding will prevent the visualization generally by gonioscopy. So trabeculectomy will be the best choice here. Next is trabeculotomy, not ectomy. So trabeculectomy, nowadays trabeculectomy plus trabeculectomy, this both is done in combination for better results. Goniotomy is the preferred ट्रीटमेंट, ठीक है. आगे देखो, ट्रीटमेंट ऑफ एंगल को, बट गोनियोटोमी प्रीफर्ड ट्रीटमेंट है, बट यहाँ पे क्या होगा, कॉर्नियल क्लाउडिंग हो जाएगा जिसकी वजह से जनरली गोनियोस्कोपी अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाएगा. दैट्स वाई यू शुड गो फॉर जनरली द ट्रैबेक्यूलोटमी प्लस ट्रैबेक्यूलेक्टमी, बट दोनों में से अगर चूज करना पड़े तो ट्रैबेक्यूलोटमी विल बी द गुड चॉइस. ट्रीटमेंट ऑफ एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा, सो एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा में लेजर आइरेडियोटोमी इज द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस. ट्रैबेक्यूलेक्टमी फॉर प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा, पेरिफेरल आइरेडेक्टोमी ट्रीटमेंट फॉर acute congestive glaucoma, and trabeculoplasty will be for primary open angle glaucoma. लेजर आइरेडियोटोमी इज जनरली डन फॉर एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा. ऊपर ही हमने देखा था एंगल क्लोजर ग्लाउकोमा. इन एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा, बेस्ट प्रोफाइलेक्सिस फॉर अदर आई, not treatment, it is for the prophylaxis for the other eye. So this is generally treatment of choice for primary angle closure glaucoma will be the फेलो आई, लेटेंट स्टेज, सब एक्यूट और इंटरमीडिएट स्टेज में, क्रोनिक स्टेज में. फॉर ऑल लेजर आइरेडियोटोमी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, बट फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑल्सो इन द अदर आई विल डू लेजर आइरेडियोटोमी. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द अदर आई इन ओपन एंगल ग्लाउकोमा, ओपन एंगल ग्लाउकोमा में लेजर ट्रैबेक्यूलोप्लास्टी विल बी डन. Colored halos least seen in, so colored halos will be least seen in open angle glaucoma.
A man presents with frequent change of presbyopic lens. Diagnosis: frequent change of presbyopic lens. This is open angle glaucoma. Krukenberg spindles are seen at Krukenberg spindles. Generally, these are the pigmentary granules seen in posterior surface of cornea in shape of spindles in case of the secondary open angle glaucoma. So this is seen in the corneal posterior surface in case of secondary angle glaucoma, secondary open angle glaucoma.